Hi, good evening everyone. Welcome to ICE Chess Championship. Today we are going to see the best game of round 6, and then the last round will start, and then immediately we will discuss the best game of round 7 also. Just I will go through with all those games. So right now I think everything is proper. Welcome Ritesh, welcome Prashant in the chat. So I can see your presence here. I hope all others also present here. So yesterday I think again there are so many walkovers. The players not turned out. So welcome प्रजत. बहुत सारे players कल आए नहीं थे. So just देखते हैं अभी this game नितिका versus मनोहर was walkover. प्रसून प्रशांत का भी गेम वॉकओवर. प्रसून आया नहीं था कल खेलने के लिए. Then the प्रणव नहीं आया था तो प्रणीत got the walkover. And then सुमित गुप्ता versus रितेश. जाकिया टिनवाला welcome. So Sumit not turned up, so Sumit got walkover. Sorry, Ritesh got walkover. Ritesh को free में point मिला. And then finally we are landed up here. The game of Prajat versus Om. So this game we are going to see. So let me check whether Om is here. Prajat is there. I know that Prajat है यहाँ पर. Prajat है. ओम है कि नहीं जस्ट मुझे देखना है कि मैं जस्ट थोड़ा एवरीथिंग सेटअप करता हूँ. आई थिंक इट्स प्रॉपर ना. वीडियो ऑडियो प्लस बोर्ड और नोटेशन सब दिख रहे हैं तुम लोगों को. करेक्ट. यस. तो बोर्ड ऑडियो वीडियो सब दिख रहा है. तो जाकिया वेलकम हियर. एंड आई थिंक देयर इज नो echo. The audio is proper. So let's start without wasting much time. Karabu was white and Om was black. So let's see this game. I black won this round. तो मैं थोड़ा सा इसको फ्लिप कर देता हूँ बोर्ड को. So black won. So just let's see from the black point of view. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Knight C3, Knight F6. First three moves properly played by white as well as black. Bishop C4, Bishop C5 is also very properly played. So hi Divyansh. So d3 उसके बाद h6 is played. So here the Harish sorry Om is very careful about this bishop g5. He want to avoid, so he played h6. Good. White castled, black castled. Till now it is perfectly fine. Rook e1, d6 जहाँ तक perfectly fine है. And as per this computer data it is saying this is Hungarian defense, and also it is also called as Gaiko Pano. So it is Gaiko Pano as well as Hungarian defense. Okay, so here the black played d6 and white replied with bishop e3. Okay, bishop into e3. The computer is bishop b6 is very good move by Harish. The computer suggesting you can also go bishop into e3, f into e3, bishop e6. ये कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा तुम खेल सकते थे. बट ओके, सो वट एवर बिशप b6 खेला वो भी परफेक्टली फाइन है मूव. ठीक है. सो यहाँ पर प्रजत इज प्लेड नाइट d5, बट here the computer is telling instead of d5 white could have gone, Prajat should have been played h3, फिर bishop d7, फिर d4, फिर e into d4, फिर knight into d4, फिर rook e8, फिर knight into c6, b into c6, queen d3. ऐसा प्रजत को खेलना चाहिए था. This is what the computer is suggesting. But whatever the move which he played, which is also not bad, knight d5 is also playable. Knight d5 भी perfectly fine है. So here he played knight into e3. So Prajat is played with rook into e3. Now remember, here he was having three options, guys. Prajat was having three options. One is capturing with knight, capturing with rook, and capturing with pawn. Now he need to decide. यहाँ पर white को decide करना है कि which move looks good in this particular position. Okay, after bishop into e3. Now let's see that there is a option of capturing with rook which he actually selected. This is one move. Just taking out his rook. But remember, now rook is not having any potential square to move right now, because left, right, and in the front all the squares are blocked. So rook is not going to do much here. Maybe a knight को हटाने के बाद this rook can come here and do some attacks. So that one possibility is there. Okay, and secondly is what definitely we will reject. Welcome Prashant.
Definitely we will reject this pawn because rook e1 पे है, so we don't want double pawns in the same file, so this move we will reject. Okay, and the third option is here. Yes, welcome Om. I think knight into e3 looks good because of this what happened, the diagonal for the bishop got opened and the knight can come in future to f5, and that also after playing this knight on h4, so one of the knight will be fixed here. Even though black captures one knight, black एक knight के साथ capture करने के बाद another knight will come and sit here. Okay, so I think capturing with knight into e3 would have been the good option. Okay, so Prashant is telling to add that number in a group. Okay, Prashant, I will try to do that. So here, after rook into e3, Om played knight into d5. Prajat played bishop into d5. So far, no mistake from anyone. Queen f6, queen d2, bishop e6, bishop into e6, f into e6. यहाँ तक भी मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है व्हाइट और ब्लैक का. गेम इज गोइंग ऑन वेरी वेल. And I think this move is created a little problem for white. This c4. I don't know why Prajat want to play d4 c4. I have not understood. Okay, so actually if you want, he could have played c3 and then d4. He should have gone for central break, or if he want, he can develop the piece here or here. Right now the rook will not do anything, but it is always better to place the rooks in the center. रुक को सेंटर में रखना हमेशा अच्छा होता है, आगे जाके काम में आता है. बट आई थिंक दिस मूव created a little weakness on this particular square, and I think the Om took advantage of that later on. So Om played queen to g6, and immediately Prajat started chasing the queen by attacking it, and this is created another weakness for Prajat. Because of this, the knight is gone here. Absolutely understandable that he want to attack the queen, but remember now this square is completely vacated for the knight. And as I always say, मैं हमेशा बोलता हूँ कि knights के लिए center squares काफी अच्छा होता है knights के लिए. तो क्या हुआ कि because of this knight movement, ब्लैक को ये सेंटर स्क्वायर मिल गया, नाइट को वो अच्छा हो गया है कि फिलहाल टेम्पररी अटैक कर रहे हो. बट ठीक है, then his opponent played queen to g4. now Prajat should take his knight back. उसे क्या करना चाहिए था, वापस नाइट को पीछे लेके जाना चाहिए था, बट ही प्लेड g3. now black played knight d4, and this move is giving a winning chance. now here the Prajat should try king g2, then f3 pawn push or h3 pawn push and try to attack this queen. So he didn't do that, and he played rook a to e1. This is given another chance for black to do the knight fork in future. If the queen is not here, queen यहाँ पर नहीं रहेगा, तो he can do that. Okay, welcome Prasoon. So rook f7, king, he played g2, then rook af1. now see, both the rooks are trying to attack this pawn. now white need to defend that pawn. white को defend करना चाहिए by playing rook to f1. rook f1. Prasoon, what happened? I'm telling you hi, so you're typing so many times. I said hi Prasoon, how many times should I tell you? And you are, one day you are playing tournament, one day you are not playing, one day you are coming, one day you are not coming. Rook f8. So h3 he played, okay. Queen g5. now at least he should have played. अभी तो खेलना चाहिए था प्रजत को, ये pawn को बचाना चाहिए था. Queen is there protecting it, but you know this knight fork is going to be disastrous. Okay, so Prajat played b3, which is a mistake. now Om took absolutely a correct advantage. rook into f2, queen into f2, rook into f2, king into f2 and knight fork. ये knight का fork नहीं होता तो it is okay, equal होता, but knight fork के वजह से Prajat lost his game, and Om very well played. queen d2 double attack दिया Om ने. He played king f1, queen into d3, rook e2, queen into g3, knight g2, queen into h3. So all are technical moves, very well played by Om here. So b4 के बाद queen came to c3, b5, c4 pawn is also gone. Knight h4 के बाद b5 pawn is gone. Okay, so all the pawns gone.
and now he is ready to make his pawn's queen. So here the white hardly can save this pawn from queening, and also this is going. Prasun, now we are removing you because you are really spamming, and this knight is also going. So Prajat resigned here. Good decision by him. But sometimes, like, we have to wait for till checkmate. Sometimes, what happens, the stalemate can also happen. Okay, any which ways we know that we are losing, so but let opponents try to win the game till end, so there is no need to be shy or something like that. Now remember, if you recall, you must have seen the IPL match. Okay, we have seen the IPL match last over. If the people need 5 balls 30 runs or 5 balls 36 runs is needed, which is technically not possible. सब balls पे 6 भी मारेंगे ना तो भी 36 runs नहीं होंगे 5 balls में. ओके, तो द टेक्निकली द टीम इज लॉस्ट. हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि 1 ball 10 runs आर नीडेड. तो डू द अपोनेंट टीम रिजाइंस एंड गो बैक कि नहीं है, वैसे भी तो होने वाला नहीं है, मैं बॉलिंग डाल के भी क्या फायदा है, मैं बैटिंग डाल के भी क्या फायदा है. सो डू दे गो बाय लीविंग दैट 1 ball? No, they complete the match. They knew that they are going to lose, but still, that now in this IPL 2020 में चेन्नई टीम was already technically out. वो कितना भी मैचेस खेलेंगे तो भी टॉप 4 में नहीं आने वाले थे, बट स्टिल दे कंटिन्यू टिल द एंड. ओके, हमें भी टूर्नामेंट भी है ना, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए. भले हमें पता है कि हम फर्स्ट नहीं आएंगे, सेकंड नहीं आएंगे, थर्ड नहीं आएंगे, या टॉप 10 में नहीं आएंगे, फिर भी हमें टूर्नामेंट छोड़ के नहीं जाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड आवर स्पोर्टिंग स्पिरिट. और सिमिलरली गेम भी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए. वी हैव टू वेट फॉर द चेकमेट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द गेम कैन बी टर्न आउट इनटू अ स्टेलमेट आल्सो. कुछ भी हो सकता है. ओके, सो प्ले टिल द एंड. दैट इज व्हाट माय एडवाइस. नेक्स्ट गेम is Suresh Konar versus Divyansh Maru. So here Divyansh Maru is played very well this match. Let's see. Okay, Prasun now concentrate and try to understand, try to learn. Okay, e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5. Divyansh was black, so I'm just flipping the board. So Gaiko Pano again castles, knight f6, c3, d6, h3. ओके, ये भी हंगेरियन डिफेंस एंड गाइको पैनो, विच इज द प्रीवियस गेम जो हुआ था, सेम टाइप. बट ओनली थिंग इज दैट इन प्रीवियस गेम में प्रजत प्लेड नाइट टू c3 एंड इन दिस गेम द पॉन इज प्लेड ऑन c3. ओके, so black castled, white played d4, bishop d6, bishop g5. आई थिंक यहाँ पर सुरेश कुमार बिशप g5 के जगह पे पहले सेंटर में डिसाइड करना चाहिए. ओके, सुरेश कुमार यहाँ पर थोड़ा डिसाइड करना चाहिए था. आई थिंक दिस पॉन टू बी प्रोटेक्टेड. ये पॉन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था बाय प्लेइंग रूक ऑन e1. दिस विल बी गिविंग द बैलेंस. ये मूव है ना, काफी अच्छा था. फिर उसके बाद तुम बिशप g5 खेल सकते थे, बिकॉज प्रोटेक्टिंग द सेंटर पॉन इज इंपॉर्टेंट. ओके, सी इन नॉर्मल सुरेश कुमार जो नॉर्मल अटैक में क्या होता है कि ब्लैक किंग जो है ना वो सेंटर में रहता है, वो टाइम में ये सब अटैक होता है. लाइक वी आर गिविंग दिस फ्री पॉन एंड वी आर प्लेइंग, बट इन दिस पोजीशन व्हाट हैपेंड, ही ऑलरेडी कासल्ड, ब्लैक ऑलरेडी कासल्ड. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कासलिंग एंड अनकासल्ड किंग. वो डिफरेंस है. मतलब पता है तुम क्या करने चाह रहे थे. देखो यहाँ पर क्या हुआ, बिशप c4, बिशप c5, यू डिड कासलिंग. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाइट गो फॉर c3, then black play this and see the black king still in the center. We play this, he play, then you play, you give check, we play c3 and he captures knight into. We are offering this free pawn, but remember black king is in center, black king center में है और हम कासल करते हैं. वो black कासल नहीं कर सकता because he will lose piece. ओके, सो ब्लैक क्या करता है, he will try to get that extra pawn. वो एक्स्ट्रा पॉन के लिए ट्राई करता है and then we stop him from the castling. हम उसको कास्टलिंग करने से रोकते हैं and then we create lot of attack. but ये जो तुम्हारे गेम में क्या हुआ, in your game what is happened here, he is already in this position. see, he is already, when you played d4, जब तुमने d4 खेला तब तक उसका कास्टलिंग हो चुका था. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि बेटर है आइदर प्ले d3 खेलो,
चुपचाप फिर रूक E1 खेलो, फिर नाइट D2, नाइट F1, नाइट G3, ऐसे पीसेस को डेवलप करो। फिर उसके बाद यू कैन प्ले बिशप टू G5 और बिशप टू E3, ट्राई टू एक्सचेंज दिस बिशप, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो, ठीक है। बिशप B6, बिशप G5 यू प्लेड एंड ही प्लेड दिस। नाउ दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर बाय दिव्यांश एंड सुरेश कोनार। आई थिंक तुमने सोचा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं दिया। गाइस, दोज हु आर वाचिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ विनिंग मूव फॉर व्हाइट हियर, बिकॉज बिशप E6 इज अ ब्लंडर। गाइस, कैन यू टेल मी? आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, तुम लोग के लिए 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। ये मूव मिस्टेक था दिव्यांश मारू का, इट वाज अ मिस्टेक। So this was a losing move from Divyansh, but Suresh Konar not found out. What is the move? Prasoon, what to reply? Tell me. क्या reply करूँ मैं? Welcome, you watch stream, you concentrate. Guys, come on, type and tell me what is the winning move for white. Okay, so Pranit is telling bishop into a6 and Om is telling d5. Very good. Om, you are absolutely correct. Here, look at these pieces. दोनों भी pieces ऐसे जगह पे है d5 and see there is a fork. दो में से एक पीस मिल जाएगा. Not bishop into e6. d5 is winning. Now d5 में क्या होगा? If we play d5, I think Suresh Konar played. Suresh Konar played d5. But I don't know what has happened here. So d5 के बाद bishop to d7 he played. I think Divyansh could have tried knight to a5, then bishop e2 and bishop to d7 and then b4 and this piece is trapped. This knight is trapped. ऐसा कुछ करना चाहिए था. Okay, but I think Suresh को it's okay. Bishop d7 played and now Suresh Konar should win. D into c6, bishop into c6, bishop b3. But सुरेश कोनार ने क्यों लॉस हुआ पता नहीं. दिस बिशप b3, h6, बिशप h4 नॉट टू बी प्लेड. सुरेश, तुम ऑलरेडी एक पीस अप हो, तुम्हारे पास देखो नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा है, तुम्हारे पास 4 पीसेस है, दिव्यांश के पास सिर्फ 3 पीसेस है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्सचेंज करना चाहिए. रिमेंबर, इट इज अ थंब रूल. थंब रूल, जब तुम्हारे पास पीसेस ज्यादा होते हैं, पीसेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो पीसेस को एक्सचेंज करो. ओके, उसको कम करो पीसेस को. बोर्ड से एक पीस को कम करने का. सपोज मैंने ये 2 बिशप नाइट को निकालूंगा, क्वीन 2 रूक को निकालूंगा, तो फाइनली पता है व्हाइट के पास क्या बचेगा? व्हाइट के पास ये नाइट बचेगा, एक्स्ट्रा नाइट बचेगा. वो एक्स्ट्रा नाइट के साथ तुम ब्लैक के पॉन्स को कैप्चर करके तुम जीत सकते हो. दिस यू सपोज टू बी डन. तुमको क्या करना चाहिए था? बाकी कुछ नहीं करना चाहिए था. बिशप इंटू f6, क्वीन इंटू f6 एंड डेवलप, कंप्लीट योर डेवलपमेंट. एंड यू नो व्हाट, योर पॉन विल ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड. ये पॉन भी तुम्हारा प्रोटेक्ट हो जाता. आई थिंक दिस ऑप्शन सुरेश कोनार ने मिस किया. आई होप सुरेश यू आर लिसनिंग. बिशप h4, g5, नाइट इंटू g5, ही गेव हिज पीस बैक. जो एक्स्ट्रा पीस था उसने पीस बैक दिया, बट फिर भी चलो ठीक है, स्टिल दिस इज ओके. बिशप इंटू e4. नाउ लुक एट द नंबर ऑफ पॉन्स गाइज, 1 2 3 4 5 6 pawns, and black is having 5 pawns but exposed king. Still white is having winning position in this. So knight d2 he played very good. Bishop went to g6. Now white is winning the game here. White जीत रहा है. Queen f3 खेला, perfect. Opponent played king g7 and यहाँ पर सुरेश कोनार ने ब्लंडर किया. यहाँ पर क्या करना चाहिए था सुरेश कोनार? Either he should played rook f e1 या रूक ए e1 खेलना चाहिए था. दो में से कोई एक रूक को सेंटर में लाना चाहिए था और उसके बाद फिर नाइट को आगे खेलना चाहिए था. ओके सुरेश कोनार, अंडरस्टूड? दिस इज यू शुड हैव डन. रूक को e1 पे तुम्हें खेलना चाहिए था. यस प्रसून, वी नो दैट इन 10 minutes इट विल स्टार्ट. वेट, वी हैव अ पेशेंस. So everything till here Suresh Konar you have played well. Now you should have played rook to e1 and you have not played and you blundered. You gave the piece back. दिव्यांश को पीस तुमने रिटर्न दे दिया और पता है उसने क्या किया? नाइट बिशप इनटू e4 and you made another blunder. You should have done, तुमको ये करना चाहिए था.
बिशप इंटू f6 चेक, क्वीन इंटू f6, क्वीन इंटू e4। अभी भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ पीसेस सेम है, पॉन्स उसके पास 3 4 5 6 पॉन्स है, और तुम्हारे पास भी 3 पॉन, और सॉरी 3 पॉन, 6 पॉन, सो इट वाज इक्वल। तो तुमने ये भी मिस कर दिया। ओके, एंड देन यू वेंट इनटू कैप्चरिंग दिस। नाउ लुक एट, if you count the pieces, now suddenly what happened, he got two rooks and two minor pieces, and you got two rooks and one bishop, so you are piece down। जो तुम piece up थे अभी piece down हो गया। अभी दिव्यांश ने क्या किया, he used the same technique। जब piece up होता है तो क्या करने का, just now I said the thumb rule, pieces को exchange करो। so what he did, see what he did is smartly, very smart guy दिव्यांश, बिकॉज उसने क्या किया, दो पीस को अटैक किया और वो एक एक पीस को कम कर रहा है। सी ही reduced one piece, now he took this pawn also, he went back, and see now smartly he will just try to exchange his rooks, he just doubled everything। and here this is also very smart idea, the bishop का diagonal is closed guys, see how he is activating his bishop, देखो बिशप को कैसे वो एक्टिवेट कर रहे हैं। सो दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न कि एक्टिवेट योर पीसेस, तुम्हारे पीसेस एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिवेट करो, ट्राई टू मेक इट एक्टिव। सो ही इज यूजिंग ऑल हिज थ्री पीसेस, सो ही मेड एक्चुअली ब्लंडर। यहाँ पर ये ब्लंडर क्या है, उसने दिव्यांश को क्या करना चाहिए था, आई थिंक यू शुड हैव, नो आई थिंक चलेगा, दैट पॉन दिया चलेगा, नो ब्लंडर, इट इज नॉट कॉल्ड ब्लंडर, दैट गिवन, but at least activity is there, check, king h1, now this, he just planned for checkmate in one move, this he played here, I don't know why did he play there, I don't know why he have not mated here, क्यों mate नहीं किया दिव्यांश, didn't see only, I think this mate, there is a support of the bishop, didn't see only, mate ही नहीं देखा इसने, इसने rook to g3 खेला, rook into f7, this then played here, then again he missed mate in 1, यहाँ पर mate in 1 था, ये भी मिस किया दिव्यांश ने। okay, but Divyansh, overall you played very well। okay, so now let's see another game, this rocking Tanmay vs Shoaib। rocking Tanmay ने फटाफट गेम जीता। today only I came to know that he is from Ichalkaranji, Tanmay Pawar। e4 e5 knight f3 knight f6 knight into e5 knight into e4। okay, so queen e2, this is a common ट्रैप्स के लेसन में मैंने बताया था, ट्रैप का जो वीडियो मैंने बनाया है ना, इन दैट आई हैव ऑलरेडी, ओके, सो दिव्यांश इज टेलिंग ही डिड नॉट सी। तो ये जो ट्रैप मैंने बताया था कि यहाँ पर अटैक है, नाइट को पीछे चला जाओगे तो फिर नाइट निकाल के मेट, दिस अ फेमस ट्रैप, आई थिंक शोएब डजंट नो, शोएब को मालूम नहीं था और वो बेचारा ट्रैप में फंस गया। तो फिर यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू प्ले हियर व्हेन यू प्ले दिस सिमेट्रिकल ओपनिंग। जब तक तुमको नहीं पता है ना, मैंने यही कहा, ये शोएब ऑल्सो ट्राइंग द सेम थिंग, he want to try to confuse his opponent by playing something new। remember, for players who know the basics, उनके लिए कुछ भी नया नहीं होता है, you play which you know। okay, you play normally, नाइट को c6 खेलो, बिशप को c5 पे खेलो, नाइट को f6 पे खेलो, d6 पे खेलो, बिशप को g4 पे खेलो, e6 पे खेलो, जो तुमको पता है ना वो खेलो, जो पता नहीं है ना उस टेरिटरी में एंट्री मत करो। if you don't know na, then they don't enter in that territory, मारा जाओगे। the same thing is happened here, knight into e5, then you played knight into e4, he played queen, now here you should play d6, यहाँ पर d6 खेला जाता है। okay, but d6 is also not good, I think knight into f7 आता है, I think यहाँ पर knight into e4 नहीं खेलते हैं, first only they play d6 and after knight into f3 you have to play knight into e5, then they play queen e2 guys, and queen e2 को the queen e7 comes। okay, ये सब खेला जाता है, this is the correct continuation। okay, even as Divyan say knight into e4 knight into e4 queen e7, but यहाँ पर as the Divyansh is saying यहाँ पर queen e7, but this is still better for white के लिए अच्छा ही है, like queen into e4, then the d6, then the d4, then the d into e5, then d into e5, knight to c6, okay, फिर bishop to b5, फिर bishop to d7, then knight to c3,
and by this way the white will try to maintain one extra pawn. Okay, suppose if you do long castling, then the bishop to f4, so like that white will try to maintain the extra pawn. Okay, so ऐसा सब होता है. So if you don't know, then don't enter in the territory. And see, you don't know, you went back and there is a problem. So you went back and you straight away fell in the trap में आ गए. देखा, you lost your queen because of discover check, and you played bishop to e7, you lost queen. So within 6 moves your game is over. This bishop g5, and see, now Tanmay played really well. After that he just continued. Okay, he just continued technically, because piece up होने के बाद just we have to exchange pieces. Okay, so this, see, is already everything is gone. So I think Tanmay played very well. He just exchanging pieces, check this, and he beautifully mated this. Okay, so here Divyansh is telling before knight e4, queen e7, nahi. Okay, let's see, e4, e5, knight f3, knight f6, knight into e5, and here Divyansh is telling to play queen e7. So this here queen e7 is not correct, Divyansh. The correct move is d6 only. Okay, I will just show you the opening book. Okay, see, this is how. Suppose if anyone plays second move as a nf6, if the white plays knight into e5, see, the best option is what? d6. Can you see here? सबको दिख रहा है? d6 is the best option. The maximum number of players, the grandmaster played d6. Okay, and if the knight goes to f3, then knight into e4, and here the correct way to continue for white is d4 and then d5, then bishop to d3 and knight to c6, castles. So like this we have to continue the game. Okay, and bishop e7 and continue the game. Okay, so ऐसा continue करना चाहिए था. Okay guys, I think the best game out of 3 is I will give to Om Mudeshwar. Okay, against Prajat. Om Mudeshwar's game is best game. Any which ways, Tanmay played very well. Tanmay game is also best game only. A good game. But his opponent went into trap. That is not Tanmay's fault at all. But okay, so Om Mudeshwar I am giving the good game chance. Now guys, be ready for, I think it is lagging. No, I don't think it is lagging. Okay guys, just come on. So last round we have to play. So let me just give me a minute to set up everything again. Okay, थोड़ा सा 2 मिनट दे दो मुझे पूरा सब सेटअप करने के लिए अभी मुझे. So wait here. Okay, so लीचेस का आ गया है कि only thing is that I need to change text now. Okay, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ना, ये लगा देता हूँ बेस्ट गेम्स ऑफ राउंड 7. जैसे राउंड खत्म होगा ना गाइस, हम बेस्ट गेम डिस्कस करेंगे इधर ही. तो वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग गाइस. ओके, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग. जैसे ही गेम खत्म होगा इमीडिएटली वी विल बी डिस्कसिंग द बेस्ट गेम. सो ऑल वेट, डोंट गो. फटाफट फटाफट हम डिस्कस करेंगे गेम स्टार्ट होते वक्त ही. अभी आई थिंक वीडियो भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो यू कैन सी द कंप्लीट व्यू. आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी. आई होप सब दिख रहा है तुम लोगों को. ठीक है, तो लेट मी ज्वाइन द टूर्नामेंट मुझे ज्वाइन करने दो. ये ओके गाइज, ओनली 1 minute लेफ्ट. आई होप एवरीवन इज रेडी. So the game is on. Divyansh Maru is leading with the 6 points. The last game luckily Divyansh won. Om Mudeshwar in second place. Rocking Tanmay, Prajat, Suresh and Prashant, they all are in joint third place, third, fourth, fifth, sixth place. Pranit and Ritesh in 7th and 8th place. Okay, let's see today who is going to pair against whom. कौन किसके साथ पेयरिंग लगेगा वो देखना है हमें. और ओनली 10 seconds लेफ्ट, अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है.
आई होप यू एंजॉयड दिस एंटायर टूर्नामेंट एंड टूर्नामेंट प्रोसीजर। सबको अच्छा लगा रहेगा बिकॉज फ्रॉम लास्ट 7 days से हम कर रहे हैं। ओके, द गेम स्टार्टेड गाइस। द फर्स्ट गेम इज दिव्यांश वर्सेस ओम मुदेश्वर। जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के लिए जो फाइट कर रहे हैं उनके बीच में मैच है, ओम और दिव्यांश के बीच में। और रजत वर्सेस रॉकिंग तन्मय, तन्मय पवार के बीच में गेम स्टार्ट है, जो थर्ड और फोर्थ रैंक में है। और प्रशांत वर्सेस सुरेश कुमार, इनके बीच में आई थिंक सुरेश कुमार विल मेक हिज मूव। प्रणीत के साथ यश मोहिते हैं। ओके, तो रितेश और प्रसून का भी गेम स्टार्ट है। नितिका आई नहीं है शोएब के साथ। फिर जस्ट मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में कि जो प्लेयर्स नहीं आए हैं उनके लिए जस्ट आई विल सेंड द मैसेज गाइस। ओके, हु हैव नॉट केम, यश मोहिते, यश मोहिते, नितिका, ओनली दिस टू प्लेयर्स आई थिंक। चेस रितेश आया है ऑलरेडी, ये दो जन ही है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6। या नितिका कब स्टार्ट हुआ है? आई थिंक यश मोहिते नॉट टर्न्ड अप, नितिका केम टू प्ले। वेरी नाइस। तो यहाँ पर किसी का गेम स्टार्ट नहीं, ऑल ऑल लेफ्ट यहाँ पर। यहाँ पर नितिका, प्रणव का पता नहीं, या प्रणव का भी गेम स्टार्ट है। वाह, वेरी गुड, प्रणव केम टुडे। अमया एंड प्रणव ऑल्सो गेम स्टार्टेड, वेरी नाइस। अमया, प्रणव, ओनली यश का गेम स्टार्ट नहीं। यश मोहिते नॉट टर्न आउट, यश मोहिते नॉट टर्न आउट। इनका गेम देखते हैं हम लोग। नितिका वर्सेस शोएब। यश मोहिते, तो थिंक दे आर प्लेइंग टू फास्ट, टू क्विक। बहुत फास्ट खेल रहे हैं दोनों भी प्लेयर्स, और सब खत्म हो गया है ऑलरेडी। सो एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सचेंज्ड। जस्ट गिव मी सम टाइम, फॉर लिटिल टाइम, नॉट मच, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। ओके, ओ इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लंडर, फ्री पीस, फ्री पीस। शोएब शुड टेक दिस। शोएब को एक फ्री का पीस लेना चाहिए, शोएब को, ऐसे मुझे लग रहा है। ओ इज नॉट टेकन। ओ इट्स अ ब्लंडर, शोएब ने मिस कर दिया। तो फ्री में पीस मिल रहा था बट उसने देखा नहीं। लॉट ऑफ बो, अभी भी फ्री में पीस है। सी नाउ ऑल्सो, ओ नाउ ही टुक, now he took, now he is winning. Remember, oh it's a checkmate, check, no not checkmate. Remember the thumb rule, thumb rule, what I said, when you are piece up, keep exchanging pieces, pieces को exchange करो,
ओ, सीधा मार दो, फिर किंग से कैप्चर करेगा, फिर रुक किंग इधर खेलो, फिर रुक्स को लेके आओ। तो दैट शुड बी द प्लान, वो प्लान होना चाहिए। बट चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट देम प्ले, एंजॉय द गेम। दोनों को एंजॉय करने दो गेम को, ठीक है। लेट देम एंजॉय। तो लेट्स गो बैक, एक एक गेम देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 18 मूव्स, 2 मिनट में 18 मूव्स हो गए हैं। दिव्यांश वर्सेस ओम, a very rough game going on, a very strong game is going on. I think the Om got an advantage here because it looks like the black king looks like weak. Oh, what happened? Guys, I think something is happened. Wait. I think the stream gone. My God. I think मेरे से गलती से कुछ बटन दब गया और इसके लिए वो स्ट्रीम चला गया। डोंट वरी, मैं लेके आऊँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम। ओके गाइस, चल रहा है अभी ठीक से। थिंक this is place West tournament, SCA championship. या, इट इज ऑन, थैंक गॉड। मुझे लगा कि सब चला गया। ठीक है, ये दिव्यांश और ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि या, ओ वाओ, वाओ, वेरी नाइस, सुपर्बली प्लेड ओम, अ वेरी ग्रेट, सुपर्बली प्लेड एंड इट्स अ चेकमेट। Very nice game, guys. Very nice game played between both of them. Okay, बहुत अच्छा गेम खेला। ओके, ये गेम को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट डाउनलोड करके रखता हूँ, डाउनलोड रॉ, इसको डाउनलोड करके रखता हूँ। एंड आई विल ट्राई टू सेव दिस गेम in a folder. Till then you people watch. Okay, so I have saved this, so we can get it, हमें फटाक से तुरंत हमें गेम मिल जाएगा। ओके गाइस, जब मैं ये करूँगा गेम तो शायद मिलने के लिए मिल सकता है हमें। ओके, तो लेट्स सी, आप गेम देखते रहो, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, तो ये गेम आ गया मेरे पास, दिव्यांश और इसका गेम आ गया है। ठीक है, तो ये वाला अभी पोजीशन ख़त्म हो गया है। लेट्स गो बैक टू द टूर्नामेंट। दिव्यांश का गेम ख़त्म हुआ एंड ओम ने सिर्फ 20 मूव्स में गेम को हरा दिया है दिव्यांश को। हम आफ्टर टूर्नामेंट वी आर गोइंग टू सी नाउ ओनली द 4 गेम्स आर गोइंग ऑन। सिर्फ 4 गेम्स बचे हैं, सिर्फ 4 गेम्स बचे हैं। ठीक है, को कितने कितने गेम्स हुए मुझे बता दो, तो फिर वो गेम्स मैं डाउनलोड कर लूँगा। सिर्फ अभी सिर्फ एक ही गेम ख़त्म हुआ है, इसमें तो कोई गेम हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी आई थिंक सुमित गुप्ता, ये लोग आए ही नहीं। मनोहर, सुमित गुप्ता बोथ नॉट केम, so there is no question. Pranav and Amaya game is going on. Pranav and Amaya is going on. Yash Mohite का he didn't turn up. यश मोहिते नॉट टर्न अप। फिर यहाँ पर प्रसून का गेम खत्म हुआ है, प्रसून वर्सेस रितेश, इनका गेम खत्म हुआ है, तो मुझे ये भी गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रसून वर्सेस रितेश, मैंने ये भी गेम डाउनलोड कर दिया गाइस। और डाउनलोड करने के बाद मुझे ये गेम सेव करना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। तो मैंने ये भी गेम सेव कर दिया है। तो दिस गेम इज ऑल्सो आई हैव सेव्ड, प्रसून वर्सेस ये। लेट्स गो बैक टू द टूर्नामेंट। प्रसून और रितेश का भी गेम हो गया है, रितेश प्रसून का हुआ है। ये गेम ड्रॉ हुआ है, नितिका वर्सेस ये गेम ड्रॉ हुआ है। लेट मी डाउनलोड दिस ऑल्सो।
ये भी गेम डाउनलोड करते हैं एंड दिस गेम ऑल्सो आई विल ट्राई टू सेव इट guys. So I'm saving these games so I can help you all to analyze these games and your mistakes. तो प्रणीत का गेम वॉकओवर में जाने वाला है, प्रसून का और रितेश का मैंने गेम ऑलरेडी डाउनलोड किया है, सुरेश कोनार प्रशांत का गेम खत्म हुआ है. ओके सो दिस गेम आई डोंट नो, प्रशांत और सुरेश कोनार ये भी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रशांत और सुरेश कोनार का. दिस गेम इज ऑल्सो ओवर. Also I downloaded. So right now only two games are going on. Okay. So one is यश मोहिते एंड अमया. यश मोहिते का तो फिर वो वॉक ओवर ही होने वाला है, सिर्फ अमया का गेम चालू है. तो और किसका डाउनलोड करना बाकी है? डिड आई डाउनलोडेड दिव्यांश हरेश? यस. रॉकिंग तन्मय प्रजत का मैंने नहीं किया डाउनलोडिंग. ठीक है, ये भी कर लेता हूँ डाउनलोड, ये वाला गेम भी. तो ऐसे हम गेम को डाउनलोड कर सकते हैं और चेस बेस में हम को ओपन कर सकते हैं गाइस. ओके, वो प्रोसीजर शायद आपको दिख नहीं रहा है विच आई एम सेविंग, बट इट्स ओके, लाइक यू नो आई कैन सेव द गेम्स में सेव कर सकता हूँ. नाउ ओनली वन गेम इज गोइंग ऑन. so so I think this game is going on, Amaya versus Pranav Junjune. I think here the black is the one who is winning. मुझे ऐसा लग रहा है कि black जीत रहा है. और इमीडिएटली डोंट लीव इट, हम लोग गेम फटाफट एनालाइज करेंगे आज और इस टूर्नामेंट को यहाँ पर एंड करेंगे. yes, you let me know in the chat guys कि you want today only I should analyze the games or like you want for tomorrow also, like what do you want? anyway give me some time. I think मुझे चैट भी नहीं दिख रहा है. लाइव गोइंग ऑन, सो ये लाइव है हमारा, तो चैट नहीं दिख रहा है. मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट पॉप अप द चैट. तो क्या यस गाइस, यू लेट मी नो, लाइक आज ही हम लोग गेम एनालाइज करेंगे कि फिर कल करें, कब करें? तो हियर Shoaib purposely, sir, I have made that draw purposely. Okay, Shoaib is telling, yes, sir, my game is over, sir. Yes, the soon game is over today only, sir. Please, Ritesh is telling, let's analyze today only. Okay, चलो ठीक है, आज ही करते हैं फिर today only. Pranit is also telling कि today only let's analyze the game. Okay, तो आज ही करते हैं. Today only. So everyone is saying today only. प्रणीत को भी शायद वॉक ओवर ही मिल जाएगा अभी. बस मैं अभी देख रहा हूँ कि सिर्फ एक गेम हम देखेंगे. एनी विच वाज ब्लैक जीत रहा है, बट ब्लैक है ना अभी. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सबको लग रहा है कि देखो ही कैन चेकमेट इन वन मूव. या सुरेश कोनार डिफीटेड यू. ओके, ओ चेकमेट छोड़ दिया इसने. चेकमेट छोड़ दिया ब्लैक ने, प्रणव ने. प्रणव को चेकमेट इन वन मूव दिखा नहीं गाइस, यू डिडंट सी द चेकमेट इन वन मूव. यही होता है, लाइक वी नीड टू सॉल्व सम पोजीशन, सम प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है जिसे हम चेकमेट वगैरह कर सकते हैं.
चेकमेट इन 1 मूव, चेकमेट इन 2 मूव, ऐसे पजल्स हमें सॉल्व करना चाहिए। हम नहीं पजल सॉल्व करते तो ये सब प्रॉब्लम होता है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड द चेकमेट्स मूव्स। ओके, एंड मेक दिस पॉन क्वीन, ये पॉन क्वीन हो सकता है। he gave the free queen। अब देखते हैं कि what plan black will use। okay, this game we will analyze here only because all the entire chat is here। सब chat में सब लोग यहाँ पर ही हैं। I think only this game will last long। okay, so Shoaib is telling bye bye Shoaib, take care। okay Shoaib, no problem, we will analyze your game। okay, I don't know what this Pranav is doing, I'm not understanding। he's giving all pieces free but not making queen। I think Pranav should do this also। I think he should play this, take the knight and then make the queen, no one can stop। that plan is perfect in this position। के बाद हम देखेंगे कि what will be the final position। without this game I don't think, without this game guys I don't think the final position will come बिना इसका, because this game is going on। so right now first, second, third, fourth position, but I think after this only we will come to know uh, the final standings कि first, second, third कौन आया है। everything is depending on this game। this game is not directly affecting but indirectly it can affect। indirectly कुछ भी हो सकता है because वो जो प्रोग्रेसिव स्कोर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, हु इज आफ्टर दैट नाइट, वो नाइट के पीछे पड़ा हुआ है। Oh, it's a blunder, it's a blunder guys। check and the knight is gone। let's see whether the black can find this। देखते हैं ब्लैक फाइंड आउट कर सकता है कि नहीं। yes, he found। so white is having the lone king। white के पास lone king है। okay, support the rook। अरे he should support the rook, what is doing। देखते हैं अभी वो 3 मूव्स में चेकमेट होने के चांसेस है। only in 3 moves if white need to play a little quick। maximum 3 moves। the 4 moves। yeah, now it is mate in 3। now 2 moves mate, this check and this mate, compulsory it is। I don't think yeah, queen check and the rook checkmate, yeah, it's the game is over। over, yes, it's a mate guys। let me download this game also and just give me 1 minute to change my settings again guys। okay, just I'm telling you like which games I'm going to analyze। if your name is missing you let me know
मुझे इमीडिएटली बता दो कि तुम्हारे गेम्स इसमें नहीं है। सी आई डाउनलोडेड द गेम्स टुडे। ओम वर्सेस दिव्यांश, रितेश वर्सेस प्रसून, शोएब वर्सेस नितिका, प्रशांत वर्सेस सुरेश, प्रजत वर्सेस तन्मय, अमया वर्सेस प्रणव. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6 games. So beside this, were there any other games today played? है कोई और गेम है क्या इसके अलावा? Guys, let me know. Is there any other games beside this? इसके अलावा कोई और गेम्स थे क्या आज? थे तो बता दो मुझे, तो वो भी गेम्स मैं डाउनलोड करता हूँ. कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेल मी. आई एम वेटिंग फॉर यू. कितने ही गेम्स हुए ना? ओके, सो गिव मी अ मिनट. फटाफट मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मुझे विंडोज़ लेना पड़ेगा यहाँ पर. या दिस गेम वीडियो इज टू. गाइस, आई थिंक इट इज़ ओके. वेट जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट. आपको दिख रहा है क्या? ओके, परफेक्ट. Shall I start? The best game of round 7 we are starting now. I think everything is proper now, you can see it. I think everyone's. Can I play with you sir now? Prasun, no, you cannot play right now because we are doing the analysis. Yes guys, are you ready now? Okay, the first game we are going to see from the round 7 is Harish versus Divyansh. And Harish, Om Mudeshwar, it is Om. So e4, e5. And I want to tell you that, oh, I forgot to tell you, the champion of the tournament. Did you found who is the champion, guys? Forgot to mention. The champion of the tournament is Divyansh Maru, and the second place is taken by Om Mudeshwar, and the third place is Rocking Tanmay Pawar. These are top three, and fourth position is backed by Suresh Konar, and fifth position is backed by Pranit. Pranit came in top 5, and the sixth position is Prajat, and seventh position is Prashant, and eighth position is Prasoon. Okay, so these are the positions. Very good. Congratulations, Divyansh, Om, and Tanmay. Now see the beautiful game which is played by Om and Divyansh. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, C3, and for C3, Divyansh played D6. Okay, Divyansh played D6 and Om played D4, Bishop to B6. This position we have seen, not able to see. नहीं दिख रहा है तुम लोगों को guys? दिख रहा है कि नहीं? Yes, I think you are able to see because I am. मुझे दिख रहा है. Okay, so Bishop G5 played Om. I think Bishop G5 is not good move. According to me, this is not a good move actually which Om played. ये अच्छा मूव नहीं है. यहाँ पर I think he can easily play Knight to E7 by Divyansh. So Knight to F6. ठीक है, Knight to D2, and Knight to D2 is a mistake. Guys, Knight to D2 is mistake. Divyansh, Knight to D2 was a mistake and you have not taken the advantage of this. Guys, can you tell me what should have black done here? Black को क्या करना चाहिए था? यहाँ पर जो ओम ने खेला Knight D2 is a mistake. And Om, I think the Divyansh forgot. He should have taken this pawn into pawn and the pawn into pawn. Then knight into d4, knight into d4, bishop into d4, and the Divyansh should have got one extra pawn. And Divyansh ने ये miss कर दिया. Divyansh missed this, guys.
दिव्यांश मिस्ड दिस. ही वॉज गेटिंग वन पॉन, फ्री पॉन मिल रहा था गेम में और दिव्यांश ने देखा ही नहीं ये. एंड दिव्यांश प्लेड कास्लिंग एंड ओम प्लेड कास्लिंग, दोनों भी ठीक है. Then now he played e into d4, c into d4, knight into d4, knight into d4, bishop in. Yes, finally दिव्यांश ने देखा और दिव्यांश को एक पॉन भी मिल गया, बट पता नहीं चला कि इसके बाद वो हारा कैसे. I don't know how did he lose. Knight f3, knight f3, bishop into b2. This is too much greedy, but okay, good move. Rook b1, bishop a3. Oh. I think Divyansh, you should have gone for this move. Divyansh, मुझे लगता है कि you should have gone for bishop to e5. If knight to e5, pawn to e5, and queen into queen, rook into rook, you are winning because you are two pawn up. Okay, suppose if the bishop into f6, pawn into f6, no problem. You are two pawn up. I think you got. I don't know what you analyzed. क्या तुमने calculation किया? But the main problem is what? When you are pawn up, don't keep your pieces unprotected. What you did, you kept your pieces unprotected, and that is the problem. And Om played queen to b3, bishop to c5, rook f d1. Okay, rook f d1, and this is also mistake. This is also mistake. Divyansh, this is also mistake by your opponent. You played well h6, correct. He played bishop to h4, okay. You played bishop g4. I think you should have played pawn to g5 here in this position, I think. But I think here, let me check, cross check. Was there anything better move here? Better move. Divyansh, did you see this move, bishop into f2 here? This move you missed, I think, Divyansh. Bishop into f2. If king into f2, knight into e4 check. If king goes back, knight into g5, knight into g5, and queen into g5. I think you missed this tactics, Divyansh. See the beautiful tactics. Okay, you missed this move. See, when there is a time, जब तुम्हारे पास time होता है ना दिव्यांश, when there is a time, you should focus for tactics. So you didn't see the bishop f2. Okay, so this move you missed actually. Bishop into f2 move you missed. And suppose if you will not take and if it comes to here, you can always go back. You are already pawn up, you can go back. No problem. And don't worry here about e5 because h6 move is already there. If bishop h4, there is a g5. And suppose if the knight into g5, h into g5, bishop into g5, you can avoid by playing queen to d7. So he will take this, but still you are material up. You can give the queen f5 check and you can take this piece free. Sorry, queen f5 and you can take this piece. तो ये सब टैक्टिक्स है, थोड़ा तुम्हें आगे सोचना पड़ेगा. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ तो थोड़ा आगे का सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है. थिंक वन मूव अहेड, हमेशा एक मूव आगे का सोचो. तो प्लेड h6 करेक्ट, बिशप h4 एंड हियर यू शुड हैव प्लेड g5. खेलना चाहिए था g5 तुम्हें. ओके, बट आई थिंक आई डोंट नो कि आगे जाके खेला कि पता नहीं. बिशप g4 इज गिविंग इक्वालिटी. ही प्लेड e5. नाउ यू प्लेड g5 करेक्ट. ही प्लेड e into f6, g into h4. He played queen to c3. You played bishop h5. This is a mistake. I think here Divyansh, why you didn't try h3? h3 is a good move because any which ways this pawn is going, a pawn जा रहा था, so better you give this way. Suppose if he takes this, now you go back and then you can play this. Okay, so you played bishop h5. He captured knight into h4. You played bishop into d1 and this is a mistake. This is a blunder. Otherwise you are not losing actually. Otherwise there is a okay move. I think because of this pawn there is all problem came because of this. So this captured, this mate. But I think your main error was keeping the bishop in the wrong diagonal. By taking the bishop in this diagonal was a mistake. You should have just gone here and finished the game. Okay, yeah, here Pranit, you are right. In this particular position, as I said,
बिशप e5 के बाद वेट यहाँ पर ना, नॉट हियर, नॉट इवन बिशप f2 डायरेक्टली, नो नॉट इवन दिस, rook fd1 के बाद h6, bishop here, and suppose g5. Yes, Pranit, your question is valid. Here the black king is getting exposed, but if he will not play h6 here, if he will not play h6, he cannot survive. He cannot survive because right now the threat is the pawn push. Pawn push is a threat and it is pinned. Okay, so another move the black is having, if he, suppose after h6, after bishop h4, he doesn't want g5, suppose g5 नहीं खेलना है, then black is having another option is to play queen to e7. ये एक दूसरा ऑप्शन था, ये खेल सकता है. फिर like rook e1 and now g5, the king is little exposed, but उसका एक ही solution है कि the pieces, the black pieces should be around the king because this pin is very strong. This pin is very strong. इसके लिए ये जो बिशप था ना, this bishop must have in this diagonal, वो उसने मिस्टेक किया, तो इसके लिए ही नीड टू bear all this. उसे ये सब अभी सहन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वन एरर. एक मिस्टेक की वजह से उसको ये सब अभी करना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन एरर ही लॉस्ट एंड सॉरी, देयरफॉर ही कुड हैव इजीली प्लान्ड. इसने इजीली फिर चेकमेट प्लान किया ओम ने, तो वो हो गया. अदरवाइज थ्रू आउट द गेम दिव्यांश प्लेड वेरी वेल, but only thing is that he was not bothered about king safety at the right time. Wrong time में उसने ये किया. And here also, like after this, here also like he was having a chance, he was having a chance to destroy the black's king and maintain the defense. यहाँ पर भी चांस था, सपोज वो नहीं कैप्चर करता, सपोज वो g3 खेलता. ओके, सो ही शुड हैव डन दिस बिकॉज देर इज नो एंट्री. क्वीन को एंट्री नहीं है, पेनिट्रेशन करने के लिए अभी तक एंट्री नहीं है, यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज बिशप है. देर इज नो वे टू पेनिट्रेट, अंदर तक पेनिट्रेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज द मोमेंट द क्वीन मूव फ्रॉम दिस डायगोनल, द वाइट विल लूज दिस पॉन बाय द क्वीन. ये था आइडिया. ओके, बट आई थिंक ही वॉज more greedy after nh4. He was more greedy of capturing this. That's why he lost. That's why he lost. Otherwise he could have played this first only. Now suppose if the queen g3 to comes, then queen f6 will come. Okay, so therefore the queen cannot come to g3 and he can use the tanmay attack. tanmay attack, tanmay ने जो कैसा अटैक किया एक गेम में, वैसे tanmay attack he can use. ठीक है, so I given the name to tanmay. Now let's see next game. प्रसून वर्सेस प्रशांत, वॉकओवर गेम था क्या ये? ठीक है, नेक्स्ट गेम. सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ओम का तो गेम खत्म हुआ. रितेश वर्सेस प्रसून. ओके सॉरी गाइस, रितेश वर्सेस प्रसून, ये वाला गेम देखते हैं. प्रसून और रितेश का. प्रसून जीता, वाह वेरी गुड, रितेश मौर्य के साथ. e4, e5, knight f3, knight c6, knight c3, bishop c5, bishop c4, knight f6. जो करेक्ट मूव्स है ना, मैं फटाफट लेके जा रहा हूँ, सो मिस्टेक रहेगा तो मैं बोलूँगा. लाइक knight e4 अटैकिंग द बिशप, d6, knight into c5, d into c5, d4. It's a blunder. Ritesh, see so many attacks, 1 2 3 4, चार लोग सपोर्ट कर रहे हैं. वहां पर तुमने पॉन को फ्री में दिया एंड प्रसून टुक इट वेरी नाइसली, ही टुक इट. दिस इज योर ब्लंडर. सी यू आर नॉट सीइंग, तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा प्रसून. यू नो विच डॉक्टर प्रसून? यू हैव टू गो टू आई स्पेशलिस्ट. प्रसून नीड टू गो टू आई स्पेशलिस्ट क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है बिकॉज देयर इज अ डिफेंडर. यहाँ पर एक डिफेंडर है, यहाँ पर एक डिफेंडर है, वो पॉन को बचा रहा है. वो प्रसून को दिख नहीं रहा है, उसके पास आंखें है बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू सी इट. तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चश्मा लगाने के लिए. तो नाइट इंटू e5, नाइट इंटू e5 एंड बिशप इंटू f7 इज ब्लंडर. गंदा मूव है, सबसे गंदा मूव है. दोनों भी फ्री में पीसेस दे रहा है. आई थिंक यू शुड प्ले दिस, but it is a ganda move. Another piece free, he took it.
bishop d2, supported the pawn, bishop b4, third piece free में दिया. Sorry, who? Ritesh is giving all pieces free. 3 piece free में दिया रितेश ने. c3, ये भी free, is giving everything free. This is also free. I think this is the entire game is of free game. Bishop h3 checkmate plan किया. King f1, rook e8, queen into b7. He played queen to g4. Idea is attacking this rook. Sorry, idea is just to attacking this rook. Played here. Check. King to g2. Queen b5. Rook d5. Check. This check. King f1. Rook d1. Finally ऐसा कुछ मेट किया. But there is nothing much into this. The both are playing blunder. दोनों blunder खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ. So but any which ways, it is appreciated to Prasoon that he accepted all the blunders from his opponent. Okay, very nice. सब blunders accept किया. Now शोएब versus नितिका. तो शोएब नहीं है अभी यहाँ पर, but शोएब ने क्या कहा कि उसने ये क्या है कि purposely he took a draw. Let's see. दोनों ने purposely. Okay, symmetry. दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं. Both are copying each other. This is a blunder. You know what? Knight into d8 नहीं, गधा है गधा. कौन है ये गधा? शोएब. You know what? Shoaib was winning. You know how? This win, queen into d8. Yes guys, did you notice? Did you notice? Queen into d8 was winning. See how these people are playing. Okay, it was free. Both were copying and it is a mate. But I think both are, see, look at their moves, look at their moves. They are just copying each other. I don't know what they are doing. इसने कैप्चर किया, उसने कैप्चर किया. I think both were copying. I think they decided to copy. इनका दोनों का नाम जेरोक्स मशीन रखना पड़ेगा अभी मुझे. Yes, they are copying each other. See, black Nitika is just offering this free piece, but he is not taking. Now he took. Earlier only that piece was going check. Now copy खत्म हो गया. See, उसको ये piece मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है. Is not taking the piece. Okay, so I think there is no point in analyzing their game. Correct. See, extra rook है उसके पास, extra rook है, and still he is still telling by messaging, "Hey sir, I took purposely draw." क्या बोलने का? See, do you know guys here how white can checkmate? Get the rook here, get the rook here. The game over. The game over. Okay. So, wow. Just for fun, I am seeing. This is what they are doing. अरे queen भी आ गया, but I don't know why it not mated. Check. It was mating to. Now checkmate in one move. Oh, purposely is giving everything free. Acha, good. Very bad players. Always play for learning, okay, not for fun. Prashant and Suresh Konar. Let's say this game. a4, a5, knight f3, knight c6, knight c3, bishop c5, bishop c4, knight f6, knight g5. Prashant, not to play this move right now because the black can easily castle. जब वो कासल कर सकता है वो टाइम पे नाइट g5 नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, तो सपोज वो कासल नहीं कर पाएगा वो टाइम में खेलना चाहिए. h6, knight f3, bishop g4, good. Knight d5 is a mistake. Knight d5 is a mistake. Knight into d5, very well played. Bishop into d5, knight to d4. He played bishop e3. You played c6. Bishop into d4. Bishop. यहाँ पर सुरेश कुमार तुमने ना एक winning move miss किया. Suresh is missed winning move, guys. When his opponent played bishop e3, na guys, Suresh Konar missed winning move. You know which is the winning move here? Winning move is knight to f3. Okay, after g into f3, look at the white king which got exposed. Play bishop h3. Idea is attack on the rook.
And suppose if the rook comes to f1, guys, rook comes to f1, see, bishop into e3, pawn into e3, then queen g5 check, and king h1, then it's mate. Okay, and suppose if the king f2, then also it is mate. And here bishop into e3 के बाद suppose if the rook into e3 comes, then also queen g5 check, king h1, and it's a mate. Okay, Suresh Kona, did you understand? You missed the winning move. Bishop e3 के बाद it was clearly winning for you. तुम्हारे लिए ये win था. Okay, Suresh? And for others also, try to understand such positions. Try to understand such position to win. ओके और यहाँ पर क्या है ना, एज ए सेड नाइट f3 gf3 बिशप h3 के बाद सपोज वो रूक को मूव नहीं करता है एंड सपोज वो किंग को मूव करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू बिशप इंटू e3, f इंटू e3, एंड उसके बाद वी कैन टेक दिस रूक, and after that any which ways we are winning the end game, like after c6 bishop goes to b3 and we can play queen to f6, and later on हमारे पास क्या है, दो रूक्स है और अपोनेंट के पास सिर्फ रूक और बिशप है, एंड रिमेंबर ये बिशप से रूक स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो वी विल विन द गेम इन फ्यूचर, आराम से आगे मूव में हम जीत सकते हैं. तो सुरेश कुमार, आई होप यू अंडरस्टूड द विनिंग मूव यू मिस, तुमने विनिंग मूव को मिस किया, and a normal game which is going on, and now you are winning here. E into f3, pawn into f3, bishop h5 नहीं, bishop h5 नहीं बेटा, सुरेश सेम चीज है, ये वाला स्क्वायर कंट्रोल करो, ये वाला स्क्वायर कंट्रोल करो, and then with the help of queen check you can mate here. Okay, bishop h5 is not a good move. Remember, next time याद रखो ये e into d6, queen into d6, this you played queen f4 and now you are planning mate. Good. Queen g5 check, king went to f1, rook a c8 capture, rook d8, rook was under attack so you played this, rook e1, f6 you played. I don't know f6 क्यों खेला तुमने, जरूरत नहीं था, but maybe you got scared of this check, but इसकी डरने की बात नहीं थी तुम्हें. Still you should have gone for this, Suresh Konar. If this check, check, and then king is safe and you are checkmating, sorry, king into f1, not coming, guys, it's over, everything is proper. Okay, so guys, it is lag. I think it is lag. Yeah, I think it is lag, maybe, no, I don't know. Acha, here the video only gone, everything unable to connect to chat, please. It's came, guys, just chat may mention. Are you able to see me? Tell me. Okay, Vihan is saying yes. Okay, okay, no, yeah, it's proper, it's proper. Okay, thank you very much. I think the chat only got something. Here Tanmay is used that counter trap of bishop into f2, king into f2, knight into e4 check. Okay, knight into e4 check, king to f1. Tanmay, yes, first 7 moves of my game was skipped. Okay, that is the opening only. You played ng5 is correct move, fourth move, Prajat. So look at this, look at this, look at this. Okay, bishop c4, you played properly, but Tanmay used little some advanced tactics. Bishop into f2, if the white doesn't know how to defend, then he will lose. Okay, so king into f2 is correct, and the only, no, I think king into f2 is not correct, Prajat. If you want to win such position, you have to play king f1. Avoid this, avoid this. Now what will happen when you avoid, still you have a chance to capture is both the pieces. Okay, if you play queen e7, so then you can capture knight into h8. So e may capture knight into e4, but that is a blunder because the queen h5 will come. Okay, and suppose if we play king to f1, then you can always play knight g6, and if he captures this, you can checkmate him like this.
Okay, so this checkmates are all possible, but only thing is that we need to learn all this. ये सब learn करना पड़ेगा. But remember, whenever anyone, for everyone, if anyone try this sacrifice, don't take it. Move your king to f1. So that is a better option. And suppose here if he goes, sorry, after king f1, he cannot go knight into e4 directly because he is losing his queen. So what he need to do, that he need to come to e7. Sorry. He need to come to e7. As he come to e7, जब वो e7 पे आएगा, फिर तुम्हें रुक को ही कैप्चर करना है. ओके, फिर he will try to save his bishop. He will try to save his bishop. So that time we can develop our pieces and continue our game. Okay, so remember next time. So bishop into f2, and I think he chased everything. Now he is planning checkmate. You played queen f3, and oh, this move he played. So this move is not correct. Tanmay, the right move is knight d4. Tanmay, this is the right move. Tanmay, are you there? Knight d4 is a right move. Now knight d4, the queen is not having a proper square. Okay guys, the queen is not having any proper square because he came to defend this square. Okay, if he wants to defend, there is a only square, that is queen to e3 guys. The only square. And then you can do knight into c2, and you can plan this, 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 so much attacks. Okay, so this is there. So if the queen e2 comes, then you can play knight to g3, and if h into g3, then queen into h1, king f2, and if you want you can do queen into c1 also, you can do it, or anything. Even you can castle, even you can castle, because remember the knight is pinned. Knight is pinned, he can't do anything. Okay, okay, so you saw after the game. Okay, no problem. Okay, g3, so knight into g3, queen into g3, queen into c4, d3, queen into c2, queen h4, rook into f7, and very well checkmated. Okay, so I think this is one of the best game of this round. Very well counter tactics. Amaya versus Pranav. This game to we saw in the real game. So much fun they were doing. Okay, like e4 e5 Pranav का देखते हैं फटाफट. This move is again because when the white was having a chance to castle, that time we should not play such moves. It's a waste of move. h3, knight f6, knight d4. I think here white is having a winning move guys. This move is not good. Capture कर दो, knight into d4, bishop into d4, and take your knight ahead. And suppose if the knight into, then bishop into d5, ऐसा कुछ करना चाहिए. ठीक है, knight into d5 को सीधा कैप्चर कर देना चाहिए यहाँ पर. Not wait for anything. So knight into f3, this is bad move. This is bad move by white. White should always take with the queen and avoid the double pawns. But उसने क्या किया, खुद के king को expose किया, and that is bad. Exposing his own king is bad. And here I think black is too ambitious. Black वो पीछे जा रहा है बिशप के. क्यों पीछे जा रहा है? डेवलपमेंट करो पहले. ट्राई टू कंप्लीट योर डेवलपमेंट. प्रणव झुंझुने, इफ यू आर वाचिंग, डेवलपमेंट क्या होगा कि तुम्हारा पॉन प्रोटेक्ट होगा, और एट द सेम टाइम तुम ये बिशप को भी अटैक करोगे और रूक को भी अटैक करोगे बाद में. आई थिंक सिंपल चेस यू हैव टू प्ले. You're not playing simple chess. You're free, giving everything free. This is too much. Okay, bishop e5. Okay, good. This, okay. Now, guys, is a question for everyone. Yeah, it is an anti-chess question for everyone. Black to play checkmate in 4 moves. Can anyone find out? Black to play and checkmate in 4 moves. Let's see who can calculate. Black to play checkmate in 4 moves. So it is for everyone. सबके लिए है, puzzle है, puzzle.
एक्चुअली व्हाट द ब्लैक गॉट वंडरफुल पोजीशन, ब्लैक के पास बहुत अच्छा पोजीशन आया है. ओके बहुत अच्छा पोजीशन है, मतलब डिस्कवर चेक के भी पॉसिबिलिटीज है, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज where the black can checkmate white king in 4 moves. Tanmay, you are there, so try to get it. Om, you can also get it. Divyansh, you are there, please get it. Try to find out checkmate in 4 moves. Pranit, you got walkover, I think. Correct, Pranit? You got walkover today? Okay, very good. Tanmay Pawar is absolutely calculating. Knight e2, guys, is giving a check. Okay, suppose let's see if he moves his king to g2, then bishop into h3 check. Now the white king is having only option of taking this or going there. Let him do whatsoever, queen into f3 checkmate. So this is the basic idea. Okay, so if f4 comes, as Tanmay said, queen into f4 check. If king g2 comes, now don't go for this check, sacrifice this, bishop into h3, again the same thing, either capture or move, then this checkmate is possible. Okay, but remember, if he captures, then queen f3 checkmate is there. Okay, so all these are the options. So very well, Tanmay, which he found. So here there was a mate in 4, but I know that the Amaya and Pranav, the both are unable to spot this. दोनों ने देखा ही नहीं इनको और कासल कर लिया उसने. ठीक है, किंग g1, knight h3. Just I am seeing this game to find out, did they miss any other checkmate moves? All are a kind of fun. I think they're missing a lot of tech. Just they are playing some. It's called alien chess. ये दोनों इस जगह के नहीं हैं players. Okay, finally found the knight fork. Good. Now also mate chance is there, but is missing. Oh, what they're playing. Here also he missed one mate. Here also he missed one mate. अच्छा चेक था क्या यहाँ पर? क्या था? नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं था. Here he missed mate. Okay guys, we will stop here because there is no point in analyzing this game where both the players are missing checkmates. Okay, so many things they are missing. Okay guys, thank you very much for playing this tournament and making the tournament successful, and congratulations once again to Divyansh Maru for coming first, Om Mudeshwar for coming second, and Tanmay Pawar for playing such a strong player playing this event. Okay, because he always plays some open event also and he get prize there also. So congratulations to Tanmay also, and Suresh Konar and Pranit also to being in top 5. So very well done. So thank you very much. So I will take leave, and tomorrow I want to tell you that tomorrow I'm playing one event in the night. Okay, 10 to 11:30 in the night में है, which is the arena tournament. मतलब एक गेम के बाद दूसरा गेम, दूसरा गेम के बाद तीसरा गेम. So if you are interested, what I will do that in the description box I will put that link. Those who are interested, they can join that. It is a free event and having some cash prize, but very less cash prize, but there are 10 prizes. The time control is 5 minutes each. दोनों के लिए 5 मिनट का टाइम कंट्रोल है. ठीक है, so see you tomorrow at 10 o'clock, 10 to 11:30. So I will be playing arena event. Okay, so thank you very much. Bye bye everyone.